Good morning, students. Welcome back to the class 11th Physical Education, Chapter 2. So today's topic is Olympic value and education. So basically, what is the Olympic values and education, and what is the history of Olympic and why the Olympic is started. So we will discuss about the Olympic values and education. So let's begin. What is Olympic? Olympic history reveals that ancient Olympics were held in the honor of god of Zeus. The city of Olympic around 776 BC as the part of the religious festival. So जो ओलंपिक है ये क्या है, जो इंसेंट ओलंपिक है, जो सबसे बहुत पुराने टाइम में जो होता था, वो ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था और किन के लिए स्टार्ट किया गया था? वो बेसिकली 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था। एंड जो गॉड थे वो ज्यूस गॉड के की याद में या स्थापना में उस तरीके से स्टार्ट किया गया था। सो बेसिकली ओलंपिक की जो हिस्ट्री है और उसकी जो हिस्ट्री है वो अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करी है, लेकिन हमने जो लिया है वो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री लिए और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रीक यूज्ड टू गैदर एट द डेम्पिया इज द प्लेस डेम्पिया एंड दे एग्जिबिटेड their unity during the ancient Olympic Games. So ये जो ग्रीक में क्या होता था, ग्रीक में पुराने टाइम में 776 बीसी के टाइम में क्या होता था, वहां पे बहुत सारे लोग, एक डेम्पिया करके जगह है, वहां पे बहुत सारे लोग गैदर होते थे और अपनी यूनिटी को दिखाते थे, वहां पे अपना जो टैलेंट थे उसको एग्जिबिट करते थे। तो इन सारी चीजों के लिए ये एक ओलंपिक का प्लेटफॉर्म बन जाता था, वहां पे अपना अपना टैलेंट शो करते थे। वहां पे जो कुछ लोग युद्ध कला में एक्सपर्ट होते थे वो युद्ध कला दिखाते थे अपनी, तो कुछ इस टाइप से इंसेंट ओलंपिक होता था। द रिवील वर्क ऑफ द गेम वर अंडरटेकिंग बाय द बैरन पियरी दे कोबर्टन। सो ये जो है बैरन पियरी दे कोबर्टन ये जो है इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स। तो इन जो ओलंपिक जिन्होंने स्टार्ट किए थे, जिनके नाम से ओलंपिक जाना जाता है, वो किसने स्टार्ट किया था? द बैरन पियरी दे कोबर्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने स्टार्ट किया था एंड ड्यू टू देयर हार्ड एफर्ट्स द जस्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1896 एट एथेंस ग्रीस एंड सिंस देन दीज गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। सो क्या है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था बैरन पियरी दे कोबर्टन ने, इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न ओलंपिक की जो कहते हैं ना स्टार्ट किया था। इंसेंट ओलंपिक जो था वो तो गॉड ज्यूस के मतलब वहां पे लाइक उनको समर्पित करने के लिए गेम्स कराते थे, वहां पे जो उनका टैलेंट्स दिखाते थे उससे रिलेटेड था। तो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, दैट इज स्टार्ट इन 1896। जो मॉडर्न ओलंपिक जिसमें अलग अलग तरीके के गेम्स स्टार्ट हुए, अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हुई, तो मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहे हैं। किसने स्टार्ट किया था? बैरन पियरी दे कोबर्टन और 1896 में ये स्टार्ट हुआ था। और अब क्या है, अब ओलंपिक हर 4 years में कंडक्ट होते हैं। जैसे इनमें ओलंपिक्स में समर ओलंपिक हो गए, स्पेशल ओलंपिक हो गए, तो ओलंपिक की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब इस हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में ही आगे शेयर कर रहा हूं, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। The ancient Greek Olympics, 776 BC to 393 AD. The modern Olympic Games started in 1896 by Pierre de Coubertin, a French baron. After the French defeat at the Franco-Prussian War in 1870, it was thought that the French youth didn't have enough physical training. This formed the idea of creating the modern Olympic Games when archaeological research discovered new facts about the ancient Greek Olympic Games. It was between 1875 and 1881 that the ruins of the site of the ancient games were uncovered. The Olympic Games began in ancient Greece in July 776 BC at Olympia.
As a festival with athlete events staged to honor the god Zeus, the Olympics also united individual Greek city-states and colonies in competition. The first Olympic Games happened at a time when there wasn't a sense of being Greek. This common identity only came up after the Greco-Persian Wars of 492 through 449 BC. So everyone who participated in the first Olympic Games did not identify himself as Greek, but as a citizen from the city he had come from. It isn't known why Olympia was chosen as the site for the Games, despite that the fact Mount Olympus was clearly a sacred place for the Greeks. Because it was a sacred place, it was chosen to hold the Games, and that's why a great part of the Olympics was occupied by religious ceremonies. In anticipation of the Games, messengers were dispatched to announce a truce, or ekekairia, among all Greek city-states and colonies. This temporarily halted all wars and facilitated safe travel to Olympia. The Games were held over the course of 1 day until 684 BC. At that point, they were expanded to 3 days. During the 5th century BC, the Olympics were further extended to a 5-day event. The Olympics were held every 4 years, from 776 BC to 393 AD. There were 293 consecutive Olympic Games. Before the Games began, an opening ceremony would take place. There was a procession of all competitors to the home of the competition, Olympia. Once they had arrived in Olympia, all participants would swear an oath to the crowd and to the gods that they would abide by all rules and compete against each other with honor and respect. 100 oxen were also sacrificed to Zeus in the most important religious ceremony of the Games. The only event held at the first Olympic Games in 776 BC was a foot race called the Stadion. The race was 600 Greek Olympic feet in distance, 1 stade. The first winner was Korybos from the city of Elis. In 724 BC, a second event, the Diabolos, was introduced. Twice as long as the Stadion, a distance race, the Dolichos, first appeared at the 720 BC Games. The Dolichos varied in length anywhere from 7 to 24 stades, but the most common distance was roughly 11,811 feet, or 3,600 meters. The track was made of sand with grooves indicating start and finish lines. An additional running event, the race in armor, was added in 520 BC. Interestingly enough, only men were allowed to participate for all the events other than the equestrian events. Participants competed completely nude. This allowed for freedom of movement and no contraband on one's body. Wrestling was added to the Olympics in 708 BC, as was the pentathlon. The latter included 5 events over 1 day: jumping, discus, stadion, javelin, and wrestling. The jumping event consisted of participants jumping as far as they could while holding stone weights, which they would throw towards the end of their jump in an attempt to propel them even farther forward. Music also played as they jumped. The discus throw in the ancient Olympics was similar to the freestyle discus throw of today. Originally made of stone, participants would throw the discus as far as possible. Later versions of the discus were made of iron, lead, or bronze. Javelin was performed with a leather strap and thrown skyward in the same side-on technique as today. Wrestling was one of the more popular sports in the ancient Olympics, as it was a highly valued form of military competition in ancient Greece. Competitors would wrestle until one admitted defeat. In 688 BC, boxing was introduced. The boxing event consisted of 2 participants hitting each other until one was knocked out or admitted defeat. The competitors would originally wrap their hands and wrists in cloth straps to strengthen and steady their fingers and hands, but eventually these straps evolved into a tough leather that would often leave cuts and scars on the faces of boxers. A blend of boxing and wrestling, the pancration appeared in 648 BC. The only restricted moves in pancration were biting and gouging. The first equestrian event was added in 680 BC. The Tethrapon, a 4-horse chariot race, was accompanied by the Keles in 648 BC. The Keles involved a rider on horseback. During the 5th century BC, a 2-horse chariot race, the Synoris, was added as a race for trotting mares, the Kalpe. A mule-led chariot race, the Epony, was run for only a short time during the 6th century BC. Olympic athletes from the Greek colonies on southern Italy, Sicily, and Asia Minor arrived at Olympia 1 month before the Games to train for their events. Upon arrival, they had to declare that they had been training for their events for at least 10 months.
Professional and personal trainers accompanied eleptes, oil massagers, in getting athletes ready to compete. Historians believe that since the early part of the history of the Olympics that athletes were very specialized, at least from 700 BC on, because of how little evidence there is on competitors winning more than one type of game. Winners of Olympic events received crowns made of olive leaves, or cortinos, and branches from a sacred olive tree called Calistephanos. These prizes were thought to be magic, at least in the first days. They also returned home as celebrities, heroes in their victorious representation at the Pan-Hellenic event. Once victors had returned to their hometowns across Greece, they were hailed as heroes and were celebrated by lavish banquets and even tax exemptions. However, their greatest prize was the historical immortality they achieved. All Olympic events were overseen by judges trained at Elis. As the administrative heart of the Olympics, Elis supervised all aspects of the game. To compete was a way to pay tribute to the gods. The competitors swore by Zeus that they would respect the rules of the games and fair play. There were formal rules to every event, and in the event of a violation, athletes were fined, flogged, or simply excluded from the games. One type of punishment was to pay fines, which could then be used to set up statues of Zeus. Spectators traveled from throughout the Greek world to watch the Olympic Games. From 776 to 550 BC, the Games were held at the sanctuary to Zeus in Olympia. Later, spectators and attendees, mostly men, gathered at the stadium, a site that accommodated more than 40,000 people by the 2nd century AD. Women were not permitted to compete in the Games, and married women were barred from attending the Games under penalty of death by being thrown off a cliff. When Greece became part of the Roman Empire, the Olympics expanded beyond Hellenic confines. Banned by Theodosius I in 393 AD, they were again shunned by the Roman ruler Theodosius II in 426 AD. Natural disasters and plundering invaders wreaked havoc on Olympia for the subsequent centuries. And so, it wasn't until 1896 that the Olympic Games were reinitiated in Athens, Greece. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पैरालंपिक्स. सो पैरालंपिक्स क्या होते हैं, जो बेसिकली इसका हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है और किन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है पैरालंपिक्स. सो बेसिकली द वर्ड पैरालंपिक इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू वर्ड्स पैरा एंड ओलंपिक. तो ये जो पैरालंपिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा एंड ओलंपिक. And all along Paralympic, the word para has been divided from the preposition of Greek, which means beside or alongside, which means that the Paralympic are the parallel games of Olympic. So Paralympic का क्या मतलब है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है. बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है. तो पैरा का मतलब ये होता है किसी भी चीज के साथ में या फिर किसी के पीछे या फिर आगे इस चीज को ऐड करना. और जो कि पैरालंपिक्स ओलंपिक्स होते ही हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो पैरा उसमें ऐड कर दिया गया कि जो ओलंपिक गेम्स जैसे होते हैं वैसे ही पैरालंपिक मतलब पैरेलल जो काम करते हैं, दोनों के गेम्स सेम होते हैं, लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वो अलग अलग तरीके के लोग करते हैं उसमें. सो बेसिकली ये मीन होता है पैरालंपिक का. और दिस इवेंट इज हेल्ड विद द रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज. तो जो भी जो एथलीट्स जो डिसेबिलिटीज से बिलोंग करते हैं, जैसे पैरालंपिक उन लोगों के लिए स्पेशली होता है जो डिसेबल होते हैं हाथ से पैरों से. तो उन लोगों के लिए जो डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए ये पैरालंपिक कराया जाता है. दिस इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन. तो ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके सिमिलर ही होते हैं. बस क्या होता है, ओलंपिक गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो बिल्कुल फिजिकली फिट और फिजिकली मेंटली और मेडिकली फिट स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं. और वहीं पैरालंपिक्स में क्या होता है, जो फिजिकली फिट तो होते हैं बट वो डिसेबिलिटीज में आते हैं. डिसेबिलिटीज इन द सेंस कि सिंगल हैंड के प्लेयर्स हो गए, किसी के लेग्स डैमेज हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जो डिसेबिलिटीज में आते हैं वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं.
अच्छा, पैरालंपिक फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था? सो पैरालंपिक्स in 1960 first time it was organized in Rome. So Rome is a country जहां पे फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे 1960 में. And at the present it comprises the 176 national Paralympics committees. So आज के जो टाइम में करंटली जो पैरालंपिक्स कमेटीज हैं, हर नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी जो हर कंट्री के अलग अलग होती है, तो टोटल 176 जो नेशनल कमेटीज हैं वो पैरालंपिक गेम्स को प्रमोट करती हैं और पैरालंपिक गेम्स में उनकी टीम को क्वालिफाई करके नेशनल लेवल पे फिर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती हैं. तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स. इन दोनों पे हमने डिस्कस किया है, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए. और ओलंपिक्स की हिस्ट्री के लिए मैंने एक एजुकेशनल वीडियो भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिएगा एंड उससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता था और कैसे कैसे अब प्रमोट हुआ है ओलंपिक गेम्स. थैंक यू सो मच.